Hello learners, I welcome you all in today's live class or secondary course. Today we are going to discuss about the topic cost and revenue, which holds a very important place in the study of economics. As you know it well, that economics is at introductory stage at your level. So in such a situation, it is quite obvious and relevant to know about how goods and services are produced, what kind of expenditures are made to arrange and to assemble all the factors of production. In your previous chapters, you might have gone through the topic production. What you have seen? क्या पता लगा था उसमें कि आपके पास कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं? दैट इज नोन एज प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. Okay, now what happens? How these factors contribute to produce a lot of goods and services to be supplied in the market to meet the needs and requirements of individuals or the people in the market. All these factors of production are assembled and they are processed, and then goods and services are produced. Okay, but how? What type of expenditures are involved in this? As you have seen that 4 factors of production: land, labor, capital, entrepreneur. Land is contributing to produce goods and services. How? Because plant and industries are installed on the particular land. Then labor force, they are doing physical or mental work to process the production of goods and services. Capital, that is quite obvious, it needs and it helps to purchase a capital goods like machines, tools, equipments, modern gadgets, and things like that. So, all these things are what we see, physical factors of production. And next to this, entrepreneur. The entrepreneur arrange and assemble all these factors to be processed and to produce output or goods and services. So this way, what we see, entrepreneur is responsible to make expenditure on these factors of production by arranging capital and money from different sources. This is the basic concept which we have to keep in our mind while we are studying about the cost and revenue. Let me discuss about the revenue part. Once the goods and services are produced, these are sold in the market and in turn income is generated. So this is the basic concept of the title which we are going to discuss right now, cost and revenue. You see, cost and factors of production. See this peak. In this peak, what we see, that all these factors of productions are mentioned over here: land, labor, capital. And the next one is the 4th, entrepreneur. Entrepreneur who manages all the production process by combining all these factors of production, by processing, to produce goods and services. Now next to this, again, these goods and services are sold in the market and revenue is generated. So this is the today's discussion. First of all, we have to see the objectives that
what we are going to achieve after the completion of the chapter, after the completion of the lesson. हमारे उद्देश्य क्या हैं? हमारे मन में बार बार ये क्वेश्चन आता है कि हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ें, हमें क्या फायदा होगा पढ़ने से. तो सबसे पहले हम इसके उद्देश्य को डिस्कस करें कि इसके उद्देश्य क्या क्या है. First objective, explain the meaning of cost of production for producing goods and services. जब हम इसे पढ़ेंगे, इस टॉपिक को समझेंगे, तो एंड में हमें क्या मिलेगा, क्या पता लगेगा, क्या हम सीख पाएंगे, क्या हमारी जानकारी होगी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की स्टडी जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. क्लासिफाई वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. किस किस तरह, कौन कौन से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे होते हैं, इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कितने कैटेगरी में इसे क्लासिफाई किया जाता है, डिफरेंट लेवल पर हम इसको कैसे अलग अलग कैटेगरीज में विभाजित करेंगे. थर्ड इज कैलकुलेट टीसी, एमसी एंड AC. TC means total cost, AC means average cost, and MC means marginal cost. Next to this, identify nature and behavior of TC, AC and MC of production unit. We are not paying our attention to know only about the various types of and calculation of cost of production, but we have to see the behavior of cost of production. TC का क्या बिहेवियर होगा, एवरेज कॉस्ट का क्या बिहेवियर होगा, मार्जिनल कॉस्ट का क्या बिहेवियर होगा. नेक्स्ट टू दिस, जस्ट क्लासिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ ए फर्म. रेवेन्यू क्या होता है जिसका डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है. अब इसके डिफरेंट पार्ट्स को क्लासिफाई करेंगे कि एक फर्म में रिवेन्यू के कौन कौन से कैटेगरीज होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं. एंड देन लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एस्टैब्लिश इंटररिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड रिवेन्यू. व्हाई दिस टू ट्विन concepts are studied together at initial stage. On the title slide you have seen the picture and I have written cost and revenue with the pics, and you see now this is the twin concept right from production of goods and services up to earning revenue. So this way we understand and we will meet the objectives of the topic which we are going to discuss right now. First of all, we have to understand the meaning of cost. Okay. In the introductory part of the topic, we discuss about the factors of production. Okay. Now, what happens in this? What are the various factors of production? Land, labor, capital and entrepreneur. Land, labor, capital and entrepreneur. Clear? Under this, we will study about how these factors of productions are combined together and produces goods and services. Now, there is a minor mistake over here, that is production, but the spelling is
not clear over here and written. प्रोडक्शन का यहाँ पे स्पेलिंग होगा PRODUCTION. Okay. So next to this, what we see, एग्जाम्पल के तौर पे एनी प्रोडक्शन यूनिट, फार्मिंग ऑफ क्रॉप्स, कोई भी हमारा प्रोडक्शन यूनिट है, फार्मिंग ऑफ क्रॉप है, वो इसके एग्जाम्पल हो गए, क्योंकि उसमें हम अगर उसकी स्टडी करेंगे तो हमें डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिखाई देगा. उस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हमें लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर जो है वो दिखेगा. ठीक है. व्हाट हैपेंस, एक्सपेंडिचर्स made on these factors of production is known as cost of production in combination. जब हम इसके ऊपर फैक्टर्स के ऊपर खर्च करते हैं, मनी स्पेंड करते हैं, इनको एक्वायर करने के लिए, इनको हायर करने के लिए, तो वो एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा कहलाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. क्लियर? Let us see types of cost. Fixed cost, variable cost, explicit cost and implicit cost. So many other costs are there, but at your level only 4 categories are studied. These are fixed cost, variable cost, explicit cost and implicit cost. What we see, what we find, fixed cost. You see, we have 4 factors of production: land, labor, capital and entrepreneur. Okay. Under this, we also use the secondary factors of production. What are these? Other materials which are being utilized during the production process. Fixed cost, once expenditure is made in the firm, in the unit, and what we find, these expenditure are known as fixed cost. It means that we must take an example for that. सपोज कि हमें कोई स्मॉल यूनिट जो है, प्रोडक्शन यूनिट एस्टैब्लिश करना है. व्हाट वी सी, व्हाट वी डू, वी एक्वायर लैंड, वी एक्वायर heavy machines, tools to be installed in this particular unit. Now, once at the beginning of the production process, the cost expenditures are made on these fixed factors to be utilized for a long period of time. At initial stage, although the production is zero, but what we see, once production is zero, but we have to make some expenditure on that. Okay, so in that situation, what we find, these expenditures are compulsory and necessary even though the level of production is zero. As the level of production increases, what we see that no further expenditures are made with the increase in the level of production. Suppose कि हमने 100 यूनिट प्रोड्यूस किया, 200 प्रोड्यूस किया, 300 प्रोड्यूस किया, 400 प्रोड्यूस किया and so on. But up to a certain period, what we see, no further expenditure is made. So, such type of expenditure made on the various asset in the beginning of the production process, what we say,
fixed cost. Clear? Next to this, variable cost. What does it mean? What do you mean by the term variable? क्या मतलब होता है इसका? That is changeable, परिवर्तनशील. उसमें हम चेंजेस लाते रहते हैं. For example, labor is variable factor. If we want to produce more unit, then what we do that? We increase the number of labor force. हम ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को इन्वॉल्व करते हैं कि हमारे प्रोडक्शन का लेवल और ज़्यादा बढ़े. ओके, बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल के अमाउंट को चेंज करते हैं, बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं जो सेकेंडरी फैक्टर के अंदर आते हैं, उनको हम चेंज करते हैं. तो देन व्हाट वी सी दैट as the level of variable factor increases, it means that once expenditure is increases, then the variable factors increases. That results to increase in the production of goods and services. So, even though the level of production is zero, variable factor is zero. Expenditure on variable factor is zero. As production increases, we increase expenditure on variable factors of production. Okay, that will be seen in the nature of the curve of fixed cost and variable cost. Expenditure made on fixed asset and expenditures made on variable factor. So one is not changeable. Fixed cost is not changeable. Once the expenditures are made in the beginning of the production, even though the level of production is zero. Okay? So what happens? Opposite in the case of variable cost. So this way we can understand the things. Next to this, explicit cost. What does it mean? As you know, हमें पता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर हमें बहुत सारी चीजें हायर करनी पड़ती है, परचेज करना पड़ता है. रॉ मटेरियल्स हो गए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हो गया, बहुत सारे स्टेशनरी हो गए, बहुत सारे पैकिंग आइटम्स हो गए. वी आर परचेजिंग फ्रॉम आउटसाइडर. we are hiring by making expenditure on the various factors of production. What happens in that sense? That is explicit cost. How we can say explicit cost? Because once the payments are made to outsiders, this is known as explicit cost. Clear? तो जब कभी भी हम भुगतान करेंगे बाहर के लोगों को और उससे हम वेरियस फैक्टर्स को हायर करेंगे, in that situation such expenditures are known as explicit cost. Such expenditures are known as explicit cost. Then what about the implicit cost? That is also known as expenditure on self-owned factors, imputed cost that belongs to a particular individual, belongs to a particular group, because they are utilizing their own factors
I mean their own property in the process of production. Clear? So this way we can be able to make a clear-cut distinction between explicit and implicit cost, as we have made in fixed cost and variable cost. So these are the basic concept of the types of cost which you have to understand at secondary course. आपके कोर्स के लेवल पे इसे ही समझना है, ठीक है? तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट टू दिस, definition of types of cost. You see what we have discussed. All these types of cost are well defined over here. That is fixed cost, variable cost, explicit cost and implicit cost. You see, with example, under fixed cost, what we see that factors, assets which do not changes with the change in the level of production. Variable cost changes with the change in the level of production. Next, explicit cost. Now you see, explicit cost is defined money expenditure incurred by the producers on both fixed and variable factors of production and raw materials. What happens in this? We make payment to outsiders. We hire factors of production, either fixed factors or on variable factors. Clear? And implicit cost. This is defined as the cost of self-owned account assets. जब कोई इंडिविजुअल अपने अकाउंट से ये सारी एक्सपेंडिचर करता है, अपने एसेट्स का यूज करता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, इन दैट सिचुएशन सच टाइप ऑफ कॉस्ट इज नोन एज इम्प्लिसिट कॉस्ट. आई थिंक ऑल दिस टाइप्स आर वेरी मच क्लियर टू यू. लेट अस मूव फर्दर. सी, how do we calculate total cost, average cost and marginal cost? Let us understand first total cost. In the previous topic we discussed about the fixed cost and variable cost. What happens in this? Some expenditures are made on the fixed assets. Some expenditures are made on the variable assets. Once both are combined together, this gives the concept of the calculation of total cost. Suppose किसी ने फिक्स कॉस्ट के ऊपर 100 करोड़ रुपीस खर्च किया and the variable cost 25 crores. What will be the amount of total cost? That will be 125 crores in total. We can make bifurcation between expenditure on fixed cost and expenditure on variable cost. हम लोग फिक्स कॉस्ट के ऊपर और वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर जो कुछ भी खर्च किया गया है एंटरप्रेन्योर के द्वारा, उसको हम लोग बाइफरकेट कर सकते हैं. एंड वंस दिस टू आर एडेड, वी कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ टोटल कॉस्ट. ओके, क्लियर टू यू? नेक्स्ट टू दिस, एवरेज कॉस्ट. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एवरेज? औसत, कुल लागत तो अभी हमने समझ लिया, ठीक है. अब हमारे पास है औसत लागत. क्या मतलब है औसत लागत का? कैसे भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं औसत लागत को? क्या तरीका होता है कैलकुलेट करने का?
तो औसत लागत जो है दैट इज नोन एज पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक यूनिट को, प्रोडक्शन के एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में हमारी कितनी लागत लगी, कितना खर्च हुआ, कितना कॉस्ट हमने स्पेंड किया, हाउ डू वी कैलकुलेट? जैसे आप नंबर सिस्टम में सिंपल सा एवरेज निकालते हो, औसत निकालते हो, उसी हिसाब से इसको भी कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? सो वी कैन सी दैट द एवरेज कॉस्ट इज कैलकुलेटेड with the help of the formula AC is equal to TC upon Q। जब हम टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल जाएगा। ओके, राइट नाउ लेट अस टेक अ ब्रेक एंड आफ्टर द ब्रेक आई विल एक्सप्लेन ऑल द मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन for further discussion, and this way you can be able to understand comprehensively the concept that how do we calculate cost of production of a firm. Okay. जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने, अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो, कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर बार ही क्यों मिलता फिर, शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर, दुनिया में इसके केंद्र बात, कोई मन चाहा केंद्र चुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने।
Hello learners. Let me discuss the further methods of calculation after the break. You see, suppose we have 125 crores total cost, which I have explained in the terms of total cost. Then what we see? We have produced 100 units of a particular commodity. Clear? Then how do we calculate? So simple way is there. यहाँ पे बड़ा आसान तरीका है कि आप 125 को 100 से डिवाइड कर दें, क्या आएगा 1.25 करोड़. This way we can take so many examples of a different form and we calculate the value of average cost. सिंपल सा बता दूं आपको कि एवरेज कॉस्ट का जो मीनिंग होगा वो होगा पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि एक कमोडिटी के एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में हमारा कितना कॉस्ट स्पेंड हुआ. क्लियर? तो इस तरह से यह आपको हेल्प करेगा कि आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकें. अगेन व्हाट वी सी दैट the other way to calculate AC, in the previous cost, total cost, we have seen that the TC is the sum of AFC and AVC. TFC and TVC, total fixed cost and total average cost. Clear? Which we have discussed by making the bifurcation in between these two, and we follow the same pattern. In the case of average cost, औसत लागत के अंदर हम लोग AFC plus AVC divided by Q. It means that the unit of production. Clear? So this way we can be able to calculate the value. So we find the same result. So don't get confused that how to calculate average cost. Both way we can be able to calculate. The third type is marginal cost. What do you mean by the term marginal? क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट? कैसे डिफाइन करोगे, कैसे परिभाषित करोगे मार्जिनल कॉस्ट को? मार्जिनल कॉस्ट जो है वो बहुत साधारण तरीके से, बहुत सिंपल वे में हम लोग समझ सकते हैं. एडिशन टू टोटल. यूनिट ऑफ आउटपुट by making additional cost for producing one more unit of output. Clear? हमारा टोटल जो प्रोडक्शन है वो कितने से बढ़ा अगर हम एडिशनल कॉस्ट और ज्यादा यूज कर रहे हैं. सपोज कि आपने 10 रुपीज खर्च करके 50 यूनिट प्रोड्यूस किया. ठीक है, आपने 10 रुपीज खर्च करके 50 यूनिट प्रोड्यूस किया. आपने अपने कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया, 10 से 11 कर दिया. एंड व्हाट यू सी, your total production increases. Suppose 57 units.
Clear? Now my question is there, what is the marginal cost? How do we calculate? Okay, कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आपने क्या किया, ₹1 ज्यादा लगाया, 11 माइनस 10, और बदले में क्या हुआ, यूनिट कितना आया आपका, 7 यूनिट, 57 माइनस 50. क्लियर? तो आपका जो टोटल कॉस्ट लगा, ठीक है, वो कितना से बढ़ा, ₹1. ₹10 आपका टोटल कॉस्ट था, आपने उसको 11 कर दिया, 11. जो आउटपुट प्रोड्यूस किया, 7 यूनिट आपने ज्यादा प्रोड्यूस किया. अब आपको कहा जा रहा है कि मार्जिनल कैलकुलेट करें. फॉरगेट द यूनिट प्रोड्यूस्ड, वो बढ़ेगा. वी हैव टू पे अटेंशन ऑन द कॉस्ट. आई मीन टू से टोटल कॉस्ट कितना था पहले, ₹10. राइट नाउ ₹11. तो MC इज व्हाट, कितना हो गया, MC कितना कैलकुलेट किया आपने? So simple way is there, TCN minus TCN minus 1. TCN का वैल्यू कितना हो गया यहां, ₹11, और TCN माइनस 1 11 माइनस 10 11 माइनस 1. तो TCN 11, TCN माइनस 1 10. मार्जिनल कॉस्ट कितना आया, ₹1. दिस वे वी कैन बी एबल टू कैलकुलेट. ठीक, तो एडिशनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट इज डिफाइंड एज द एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, one more or less unit of output. Now, the other formula is also there to understand in a very well manner, that is MC is equal to delta TC upon delta Q. Okay. What does it mean? टोटल कॉस्ट कितना से बढ़ा और टोटल आउटपुट हमारा कितने से इंक्रीज हुआ. जब इन दोनों का रेशियो ले लेंगे तो हमें मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा. क्लियर? सो दिस इज द वे टू calculate the marginal cost. Okay, so we can be able to make calculation with the help of this formula. Clear? You see the example. Units of output, total cost ₹7 in rupees. What happens in this? Total cost is 1110, मतलब 1110, and units produced, this is 10 units by spending 1110 and 11
units by spending 1,199. And you are given the assignment, given the task to calculate marginal cost. Clear? So what happens? How do we calculate this? See, units of output increases from 10 to 11 and marginal cost we have to calculate, and the total cost increases 1,110 to 1,199. What is the formula? Formula is TCN minus TCN minus 1. टोटल कॉस्ट कितना लगा आपका? 111 and 0. जब आपने एक ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस किया तो आपका कॉस्ट हो गया 1199. मतलब इसमें से अगर आप 1199 में से 1110 को माइनस कर लेंगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा? 89. And increase in output, that is delta Q. Then what happens? Divide 89 by 1. Change in output. Change in cost divided by change in output. So 89 divided by 1, that is known as, result is 89 rupees. So this way we can be able to calculate marginal cost. Then average cost, simple way is there. 1110 divided by 10, that is 111. Again 1199 divided by 11, that is 109. So data will be given to you even in examination. You have to apply your methods of calculation, and this way you can be able to calculate the value of average cost and marginal cost. Next to this, revenue. What does it mean? How do we understand the term revenue? जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो जाते हैं तो इन गुड्स एंड सर्विसेज को हम मार्केट में सेल आउट करते हैं, भेजते हैं. ठीक है? तो यहां पे क्या देखा हमने? उसको सेल आउट करने से जो इनकम हमें रिसीव होती है, दैट इज कॉल्ड revenue. Income which we are receiving by selling goods and services in the market. Rather, we can define the term sale receipts of goods and services sold in the market is known as revenue. Clear? So, what we see? Revenue can be studied in different types. First, total revenue, average revenue and marginal revenue. How do we calculate revenue? Total revenue is equal to price into quantity, or TR is equal to P into Q. P stands for price, Q stands for quantity. जो हमारा प्रचलित प्राइस है, जो प्राइस
जिस प्राइस पर हम गुड्स को सेल आउट करते हैं उसके आउटपुट, उसके प्रोडक्ट को, यानी कि प्राइस और आउटपुट के प्रोडक्ट को से हम टोटल रिवेन्यू रिसीव करते हैं। क्लियर? Then average revenue. Average revenue is denoted as AR. It is calculated from the total revenue. Rather, we can say that revenue is equal to TR upon quantity. Total revenue divided by quantity. What does it mean? Per unit revenue of a commodity is known as average revenue. Suppose we are talking about the price of a pen. प्राइस क्या है? पेन की प्राइस कितनी है? 10 रुपीज है. सो सिंपल वे इज देयर कि एवरेज रिवेन्यू क्या हुआ? 10 रुपीज. अब जितनी यूनिट सोल्ड आउट होंगी उसको मल्टीप्लाई कर दो, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दो प्राइस से, देन वी कैन बी एबल टू कैलकुलेट total revenue also. And once total revenue is divided by the unit of quantity, that is called average revenue. Clear? Now next to this, marginal revenue. Again the same is there. MR is equal to TR upon delta TR upon delta Q. Okay, what we see? Increase in total revenue and increase in quantity sold out, दोनों के रेशियो का जब हम रेशियो लेंगे तो हमें मार्जिनल रिवेन्यू मिलेगा. Okay, so these are all about the concept of revenue and cost. Okay, all the best. Try to read it out. If you have any query, you can send it to me. We will try our level best to answer your query, make you satisfied to understand the basic concept and to have a good knowledge of economics. All the best.